देखो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट क्लास रे स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करथिले सो चैप्टर थिला इंट्रोडक्शन दे देबा देन आगो प्रोसीड करिया चैप्टर थिला स्केलर एंड वेक्टर्स योर चैप्टर इज स्केलर एंड वेक्टर्स तो फिजिक्स रे this is a chapter in physics रे आसुथिला पदार्थ विज्ञान रे गोटे चैप्टर रहउथिला स्टार्ट करथिले जस्ट चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर्स स्टार्ट करथिले सो स्केलर मींस कोन थिला ना द क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन द क्वांटिटी व्हिच पोजेस मैग्नीट्यूड जार शेप एंड साइज अछि एंड नो directionless these are scalar so scalar रे कोन एग्जांपल असतला कहि परिबो स्केलर एग्जांपल कोन असतला ओनली नो डायरेक्शन क्वांटिटी थिला these are स्केलर रे एग्जांपल कोन थिला वॉइस क्लियर होची mass length yes sir scalar example कौन था what are the example of scalar quantities mass length time no time यार डायरेक्शन नहीं मास का कोई m लेंथ को l टाइम को t ये डायरेक्शन नहीं these are scalar quantity असतला vector quantities has a direction so vector quantities का example के किसी दे परिबो velocity v vector force f vector these are vector quantities so here we discuss a chapter physics scalar vector in that chapter we discuss about scalar quantity and vector quantities जोटा previous class रे कहिथिले आउ वेक्टर क्वांटिटीज को हमें टाइप्स करथिले वेक्टर क्वांटिटी को टाइप्स करथिले एई पर्यंत तुमर जाइथिला तो ओके क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर जाइथिला ओटा डायरेक्शनलेस मास को डायरेक्ट लिखुचंती दैट इज m नो डायरेक्शन टाइम को डायरेक्ट t लिखुचंती नो डायरेक्शन ओनली सिंपली लिखाबे डायरेक्शन दियाबा नै डायरेक्शनलेस आसुतला एटा भूल आसुची डायरेक्शनलेस मींस स्केलर क्वांटिटीज डायरेक्शन असले वेक्टर क्वांटिटीज सो स्केलर एंड वेक्टर्स
we all already it was discussed on types of vector types discussion करथिलो. So ये जो vector quantity और direction अछि, direction पे हमें तारा direction केमिति आसीबो, how we represent direction of vector. So हमें heading को लेठी orthogonal unit vectors. Orthogonal unit vectors. Next is your heading orthogonal unit vectors. Right heading orthogonal unit vectors. Orthogonal orthogonal units vectors. Heading kara orthogonal unit vector means orthogonal means perpendicular, means 90 degree. Orthogonal means 90 degree. Unit vectors. Vector means the quantity which has direction. The quantities which has specified direction, that is vector. Digo thile vector. So vector re here we discuss orthogonal unit vector. टिके म्यूट कर दियो, समस्त टिके म्यूट कर दियो, कर देला, तो टिके म्यूट कर दियो. देखो ताले ऑर्थोगोनल मींस 90 डिग्री. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हमें पढ़िले. वेक्टर मींस द क्वांटिटी हैज ए डायरेक्शन कथा पढ़िबा. सो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर डिस्कशन कले हमर डायरेक्शन नेले. डायरेक्शन इज पॉसिबल हाउ मेनी एक्सिस. ओटी गोटे मोशन कला गति कला ता डायरेक्शन केते एक्सिस नै परिबो होय परिबो. गोटे डायरेक्शन ऑर्थोगोनल मींस 90 डिग्री. वेक्टर्स मींस क्वांटिटी जो डायरेक्शन अछि. सो जते बेले गोटे बॉडी मोशन करूची सेते बेले हमें ता दिगो कथा पढुची बा डायरेक्शन कथा पढुची. मोशन बॉडी रा हमें डायरेक्शन बा दिगो कथा आलोचना करूचंती. सो डायरेक्शन कहले दिगो कहले बिकॉज़ वेक्टर हैज डायरेक्शन. बिकॉज़ मु जदी 10 किलोमीटर ईस्ट को जीबी जा हबो, सपोज मु 10 किलोमीटर वेस्ट को जीबी, ईस्ट को न जाय वेस्ट को जीबी, तले सेही प्लेस रे पहुंची परिबे नै. 10 किलोमीटर ईस्ट को गले जो प्लेस रे पहुंची. अरे म्यूट कर दियो पिताई, म्यूट कर दियो. 10 मुजा कहूँ शुण मत शुण मुजा कहूँ 10 किलोमीटर ईस्ट को गले आमे जोडी रीच करिबा. 10 किलोमीटर वेस्ट को गले सेट रीच कर परिबो नै. 10 किलोमीटर साउथ को गले यार ओपन रखिछ. ब्रह्मानंद खिलार सो वेक्टर क्वांटिटीज कहले ब्रह्मानंद खिलार चेंज हो गला. हाउ देखो वेक्टर क्वांटिटीज कथा कहले जार डायरेक्शन ऊपर हमें डिस्कशन करछन ब्रीफली से वेक्टर क्वांटिटीज. सो वेक्टर रे जदी हम आसी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, that means orthogonal means 90 degree perpendicular unit vectors. So हमें डिस्कशन करथिला जदी वेक्टर कथा पढिबा ताले वेक्टर is depends on direction. So any object or any body can be represented by direction 3 axes. Body ro direction can be represented as 3 axes. Mainly we discuss but focus on 3 axes. Direction can be represented on 3 axes such as x-axis, y-axis, and z-axis. 3 axes. Either move x, y, or z. So x-axis has unit I cap. Y-axis unit j cap. Z-axis unit k cap. तुम मन को क्वेश्चन आसुथिबो आमे तो x-axis कहउथिले, y axis कहउथिले, z axis कहउथिले, पुणी i cap, j cap, k cap कोन
ना प्रत्येक सब्सटेंस को हम यूनिट द्वारा रिप्रेजेंट करूचंती मास को रिप्रेजेंट करूचंती यूनिट हला केजी लेंथ इज योर मीटर करंट इज योर एम्पियर वर्क इज योर जूल फोर्स इज न्यूटन एसेट्रा सो हमें मोशन जेतेबेले कहउचंती इफ वी से 5 I cap means 5 unit on x axis 5 I cap means this is unit vector of a unit vector direction of unit vector of x axis so 5 I cap 5 I cap minus 2 k cap that means 5 minus 2 5 0 minus 2 5 unit x axis 2 unit z axis so in orthogonal unit vectors रे lekha a vector lekha theory part ta lekha a vector can be represent a vector can be represented as mutually three perpendicular माने लंब a vector can be represented as three mutually perpendicular axes a vector can be represent गोटे direction वाला quantity three mutually perpendicular axes represent हुए axes such as x axis comma y axis and z axis three mutually perpendicular axis representation of a vector such as x axis y axis and z axis x y z so eta o a point रे a रहिला o रु a मोशन करछि वेक्टर रो three mutually perpendicular axis x y and z axes तीनटा axis maximum 3 axis स्कूल भी पढ़ी के आछो पॉसिबल then write these axes are having Orthogonal these axes are having can be represent as a mutually three perpendicular p r p n d I c u l r perpendicular axes axes such as x axis and z axis and z axis. The axis these axes are having unit vectors axis ର unit direction I cap j cap and k cap समस्त कर unit अछि so these axes are unit the orthogonal unit vectors. orthogonal means perpendicular I cap j cap k cap so I cap j cap k cap are unit vectors these are unit direction that means unit vectors these are unit I cap j cap k cap गोटाटा यूनिट हां direction देला can be repeat करे दरकार नहीं मु कहि दउची बुझियो ओके any vector a can be represent हां ठीक है स्टॉप रो any vector a can be represent a vector represent करिबो a vector equal to x direction है x y direction है ay z direction है az x रे x y रे y z रे az
that is a ର value, a ର magnitude ax square, ay square, Z square. az square root value. This is on direction, this is on value. Ax square, ay square, az square root values. एटा में डायरेक्शन अनुसार वेक्टर रिप्रेजेंट करछन ax square, ay square, az square root. वेक्टर मैक्सिमम 3 एक्सिस से रिप्रेजेंट आसुछि. Vector means quantity has magnitude and direction. कंप्लीट ही गला. ओके देखो हमें डायरेक्शन कथा आनिले 3 एक्सिस. A vector represent is 3 axes. So I, j, k are unit vectors. A vector of quantity represent I cap, j cap, k cap. So here we solve some question that based on vectors. So question 1, if a vector equal to 2i cap plus j cap plus 2k cap, that means 2 unit on x axis, 1 unit on y axis, j means y, 2 unit on z axis. I cap means x unit of x axis unit vector, 2 unit x, j means 1y, k means 2z. So this is your vector. Your question is then find magnitude of a. What is value of that vector? Solve कर परिबो. अब solve कर परिबो ना गोटे solve कर दवा से बड़ा तुमे करिबो. ओके पॉसिबल होबो. तले मु गोटे फर्स्ट गोटे क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करूची. So your formula is answer ax equal to x coordinate or x value is 2, ay is equal to 1, az equal to 2. So x, ay, az 2, 1, 2. This is your 2, this is your 1, this is your 2. So now magnitude of a, that is x square, ay square, az square root over. That can be 2 square of 2, square of 1, square of 2, cross square root. That is 4, 1, 4. 9 root. That value is 3. So here we discuss that everything, every quantities has certain unit. When we discuss about direction, so direction also 3 units vectors or unit I cap, j cap, k cap. So value is your 3. Question number 1. This is your based on orthogonal unit vectors direction over. Then question 2. Question 2 कहिछि कि चेंज करला. If a vector equal to 3i cap minus 2k cap, then find magnitude of a error mode.
Then find magnitude of A. Second question. So it is the X value and Z value. A body can move on X axis and Z axis. Both X and Z rach, X Z rach. Then here for answer X equal to 3, AY equal to 0 and AZ equal to -2. 3, 0, -2. That means magnitude of A mod square of 3 because J क्या बनाई 3 square plus 0 square plus -2 whole square square. That is square of 3 9, 0, 2 square 4, 9 plus 4 that equal to root 13 asila the scalar values. Okay. Are you clear? So first part is your orthogonal unit vectors that represent direction which has x and y, z, 3 axes. Then addition. रूम भितर पाइबो Then addition of vectors. Then addition of vectors. Addition of vectors. Next part is your addition of vectors. The addition of vectors. Addition of vectors based on scalar quantity direct add ही जाउची 5 kg plus 3 kg 8 kg direct add as possible, but addition of vectors based on some laws. Vector direct cannot add directly. Vector quantities has both magnitude and direction, so these are cannot add directly. Addition of vector based on some laws, such as first I or A, triangle law. Triangle law of vector addition. Double I, some law that based on vector addition. Vector quantity cannot add directly, that add with some laws. First I triangle law of vector addition, कितना law ऊपर vector addition based कुछ. Direct cannot it add.
triangle law, double I, parallelogram, सामांतरिक चित्र, parallelogram law of vector addition, triple I, polygon law of vector means direction quantities, vector addition. So scalar quantity directly add with each other, but in case of vector quantities, these vector quantities are obey some rules or some laws. Such laws are triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, polygon law of vector addition. So first of all, we discuss about first law is your addition of vector addition padiba. That is first law, triangle law of vector addition. First part is your triangle law upare discussion kariba ba clear about triangle law kon, eta how it used in vectors. First is your triangle law. Of vector addition. Triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition, law or statement. Statements means the law explain. Statement: if two vectors are having magnitude and direction, two vectors are having magnitude and direction acting two sides of a triangle. Two vectors are having magnitude and direction acting two sides of a triangle in same order. Two sides of triangle in same order. Then their resultant passing third side of a triangle in opposite order. So first statement, triangle explain statement. This is your statement. Statement first represent kale statement अनुसार डायग्राम करिबा ट्रायंगल ला वेक्टर एडिशन असले ट्रायंगल ला एटके मोबाइल फेंकছি সেটা বন্ধ করে রাখবি So diagram is your, if two vectors having magnitude and direction, two sides of triangle in same order. Suppose P, Q,
is triangle. Two vectors, A vector, B vector. Your statement is two vectors having magnitude and direction. It is magnitude and direction. Two sides of a triangle in the same order. That is same order. Then the resultant passing third side of a triangle, the resultant third side of a triangle in opposite order. This is R vector. Resultant third side of a triangle in opposite order. তাহলে আমি ভেক্টরের ফার্স্ট ট্রায়াঙ্গেল না করে ভেক্টর addition cannot possible directly. The addition of vector cannot possible directly. That based on certain rule, such as first rule is your triangular vector addition. This rule, your triangular vector addition, but this rule explain that whenever two vectors acting two sides of triangle in same order, all the initial two vectors same order, then the resultant means is your final value. Your final value acting third side of triangle in opposite order. So finally, we also reach P to S directly. This is your triangle. তাহলে এটা ডায়াগ্রাম করুଛନ୍ତି তাহলে ডায়াগ্রাম রে থিওরি করিবা let A vector and B vector are acting to adjacent sides. A vector, B vector acting to adjacent sides. Adjacent means close, adjacent sides of a triangle. Then the resultant R vector, A vector, B vector to adjacent sides. Then the resultant R vector acting on third side. A vector, B vector, two sides, the resultant third side. Suppose here we calculate the value of R. R value calculate kariba. Calculate value of R. R value calculate kariya pehle. This is not a right angle triangle. It is right angle. Here we calculate the value of resultant R. If calculate the resultant R vector, A vector, B vector to adjacent sides, the resultant okay. देखो, if we calculate resultant R, so this is not a right angle triangle. Resultant calculate means this is not a right angle triangle. If we calculate resultant R, so here we heading analytical method. Analytical method. Resultant calculate means analytical method. This is not right angle triangle. So resultant calculate by analytical method use करें. Analytical method. Resultant calculate by value by. That is analytical method means then then again draw the diagram. Two vectors, two sides. A vector, B vector. This is R vector. P, Q, S. So this is your triangle. If we calculate the value of R, then draw dotted line.
So join at point T. Because a triangle no R calculate possible no. If we calculate R, then it became a right angle triangle. But समकोणी बा right angle triangle हेले R calculate करी हबो. कारण एठी डायरेक्ट R calculate possible no. R रो मूल्य कारण हमें कहि देले लॉ टा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दे. टू वेक्टर टू साइड सेम ऑर्डर. अरे मोर कथा रेकॉर्डिंग के करछि सेंड करछि U is so this is your triangle सर ऋषि सर आज्ञा वॉइस क्लियर आसुन सर आपण ओटी आसुनी एबे आसिला ओके ए नेटवर्क इशू कोन रहितो ना हां एबे क्लियर आसु कंटिन्यू करू सर ओके साउंड क्लियर आसिला देखिलो देखो then here we calculate the value of r calculate करिया कहले two vectors two sides रे अछि r third sides रे अछि opposite order if we calculate value of r this is not right angle triangle so for right angle triangle Divagar sir clear आछि बैकग्राउंड साउंड आसु सर साउंड आछि आसु ओ एई जो साउंड आसुची हां हां एबे आसला क्लियर ना रिपीट साउंड उडा कोन आसी जाउची रिपीट साउंड आसला एबे आसुनी ना से कोन रिकॉर्डिंग बळे आसुची साउंड ता मझरे हां हां किछ समय पर आसु कोन आपण इशू अछि एबे बर्तन क्लियर अछि सर कंटिन्यू करन हां से कोन टेक्निकल असुविधा कोन रहउथिबो सेतमे ता रिकॉर्डिंग साउंड भी अगेन आसुची रिपीट हे ओके नाउ क्लियर अछि सर कंटिन्यू करन हां then r value calculate here not possible so ame only law explain kale two vectors two sides resultant is third sides so the value of r cannot possible on that triangle so if we calculate the value of r then it became a right angle triangle एको right angle triangle kale r value calculate kariba right angle triangle means technical असुविधा कोन रहउथबो सेतमे ता रिकॉर्डिंग साउंड भी अगेन आसी रिपीट नाउ क्लियर अछि सर दिवाकर सर क्लियर अछि बैकग्राउंड आपण कोन साउंड आसु so the value of r can recording ता कोनी रिपीट करउछि पिला की करछि पुनी कंटिन्यू करन सर रिकॉर्डिंग को के रिपीट करउछि पुनी से साउंड तो काटी दियंत कैंसिल कर दियंत काटी दियंत रिकॉर्डिंग को के रिपीट करउछि पुनी से साउंड तो कैंसिल कर दियंत काटी दियंत सर मु एके रिजॉइन होउछि हां सर जॉइन करन ओके
R value cannot calculate from that triangle. If we cannot calculate value of R from that triangle, then we draw perpendicular to make it a right angle triangle. From right angle triangle, we already calculate value of R. So, हमें पढ़ुଥିଲେ two vectors, two sides of a triangle in same order, then resultant third sides of triangle in opposite order. This is your triangle law. So, resultant value R calculate करेगा अच्छी. Then draw a perpendicular. Draw a perpendicular means 90 degree. Perpendicular ST on QT. Draw perpendicular ST on QT. Perpendicular draw करके आपको right angle triangle करो ST on QT. So in perpendicular draw means in PST on in PST triangle. Perpendicular draw means in PST. Draw perpendicular ST on QT in PST triangle. So this is became a right angle triangle in PST triangle. So in PST triangle is your right angle triangle, a diagonal corner square, your SP square, diagonal square equal to PT square plus ST square. So एथर R value calculate करिया possible है perpendicular draw करी right angle triangle make कले R possible है R value calculate करे कैसे that is P square by SP square equal to ST square plus PT square. ठीक अच्छी. So your the diagonal square is base square plus height square sum. This part add with the triangle to calculate value of R. So here SP square equal to PT square plus ST square. But PT here the diagonal square is base square plus height square sum. This part add with the triangle to calculate value of R. So here SP square equal to PR plus ST square. What the PT here the diagonal square. अच्छा ओके पिला माने टेक्निकल फॉल्ट रहउची. हाँ ओके पिला माने टेक्निकल फॉल्ट रहउची केंद्रापड़ार स्मृति रेखा सडंगी. हाँ इको होउची. हाँ पिला माने टेक्निकल फॉल्ट रहउची. सो एई प्रूफटा आर र वैल्यू केमती कैलकुलेट करबा ए प्रूफटा तुमको नेक्स्ट क्लास रे प्रूफटा आर र प्रूफटा मो कैलकुलेट करी केमती प्रूफ कैलकुलेट कराबो आर ऊपर बेस करी केमती कैलकुलेट हो प्रूफटा ए वैल्यू माने वेक्टर रो जो हम पढुचंती एडिशन रूल द वैल्यू ऑफ आर केमती प्रूफ कैलकुलेट हो कैलकुलेट करी की ता ऊपर बेस करी प्रॉब्लम करबा नेक्स्ट क्लास रे ता ऊपर बेस करी प्रॉब्लम करबा ये जो आर रो वैल्यू कैलकुलेट करिया वेक्टर एडिशन ने. ओके तापर बेस करी प्रॉब्लम करबा नेक्स्ट क्लास रे. मु एटा जो वेक्टर्स रो लॉ लिखिली कारण वेक्टर क्वांटिटी केबे डायरेक्ट ऐड हे परुनी. सो वेक्टर क्वांटिटीज ओबे मेनली थ्री रूल्स दैट इज ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, देन आसुची पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन आसुची पॉलीगन लॉ. Many sides means polygon law. से तीनटा लॉ ऑल थ्री लॉ हमें डिस्कशन करिबा, फार्मूला कैलकुलेट करिबा
ता ऊपर न्यूमेरिकल करिबा सो ट्रायंगल रे ई r रो मूल्य ई ट्रायंगल रू कैन नॉट ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ r सो हियर वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर राइट एंगल ट्रायंगल करथली डायगोनल स्क्वायर बेस रो स्क्वायर प्लस हाइट रो स्क्वायर रिप्रेजेंट करथली सो एई वैल्यू रो पके टोटल r वैल्यू केते आसीबो मु तुमको शो करी प्रूफ करेबी जदि तुमे जोटी आसीबो क्वेश्चन अराइज करे पचारिबो ओके ओके थैंक यू ओके थैंक यू डायगोनल स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर रिप्रेजेंट सो